रघुपति कांडा पुंज पूछी कुशल नाथ कुशल देगी पटगंज स्वाया जाफरनाथ कहो तुम दाय स्वाहा ताई सदा सुख कुशल निरंतर सुंदर मुनि प्रसन्नता ऊपर स्वाहा सोई विजयी विनयी गुण सागर स्वाहा नाथ पवन सुत कीन जो करनी सौ सौ मुख न जाई सो बनी स्वाहा पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए हर्षि लाए स्वाहा कहो तात के बात जान की राति करति रक्षा सुप्राण की स्वाहा नाम पारो दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निष्पत जगदित गाय प्राण कई बाट स्वाहा चलन मोहि चूड़ामणि कीनी रघुपति हृदय लाए सोई लेनी स्वाहा नाथ जुगल लोचन परिवारी बचन कहे कछ जनक कुमारी स्वाहा अनुज समेत गए प्रचरना दीन बंधु प्रण तारति हरना स्वाहा मन करम वचन चरण अनुरागी कई अपराध नाम हो त्यागी स्वाहा अब एक मोर में माना विश्रत प्राण न कीन बयाना स्वाहा नाथ सुनई नहीं गो अपराधा विश्रत प्राण करे निवादा स्वाहा बिरे अगिंतन तूल समीरा स्वास चरै माई शरीरा भजन होई स्वाहा केदिक बात प्रभु जातु दान की कोई जीतिया निभि जान की स्वाहा कुमार मुनि कन गारी स्वाहा कंदे युग प्रभाव स्वाहा प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमित सुत सामगन गौरी सा स्वाहा सावधान मन कर पर शंकर लागे कान कथा आदि संद स्वाहा कोप विरावट पालित लंका कई विद्य दो दुर्गति बंका स्वाहा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत विमान स्वाहा साका वृक्के बड़ी विलसाई साका ते साका प्रजाई स्वाहा नाथ चिंतार गुरदार गुराई नाथ नगत मोरी प्रभुताई स्वाहा साका वृक्के कुछ जोग नहीं जापर सुमन फूला तब भवानी स्वाहा तुम्हारा सुभाव जी जाना ताई बदल तुझ भावना स्वाहा यह संवाद जा सुरावर पुलिचरण कृष्ण भाव स्वाहा सुरपुर वचन कहे कपिंदा जय 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 कृपाल सुकंदा स्वाहा स्वाहा कौतुक देखि सुमन वो वर्षि नवदेव वंचले सुहर्षि स्वाहा कविपति बेगी बुलाए आए जूत बजूत नाना वरण अतुल बल बानर बाल गुरुत स्वाहा रघुपति पंकज नभ सुंदर सुबनाना स्वाहा जप सकल मंगल मय की सुमनिया नीति स्वाहा रूपं जाना वैदेही परिक्रमा स्वाहा स्वामी साचन रही संकर जवानी मंदोदरी अधिपति स्वाहा रस जोड़ी करमति मगागी बोले वचन नीच रसवागी स्वाहा अंदर ले उठा कर हम पहले को बजा की तरह से ताकुनारी समेत बड़ी आशा स्वाहा अस्के बेचिताय और नाय चले सभा ममता अधिकाय स्वाहा मंदोदरी हृदय का चिंता भर कन पर उसी विपरीता स्वाहा शिवाय सिद्ध के माई स्वाहा सजीव गत गुरु दीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म कर दीन होई बैगनी नाथ स्वाहा सोई रावण को बनी नाय नष्ट करे सुनाई स्वाहा अवसर जाने विभीषण मावा भ्राता चरण सीते नावा स्वाहा पुलिस नाय बैठी जगत बोला वचन पाई विशासन स्वाहा जो विमान पूछे मुझ माता मते लोग कहे ताता जो स्वाहा जो आप चाहे करने हो नाना स्वाहा जो परनाय विकार गुसाई सत्सो की जिंदगी स्वाहा पदपति जो कुशला दी स्वाहा मुझे बिलख से सुना कई पति ये बात तुम्हें कुशल अच्छा हेऊ છે यम यम चिंतयते कामं तम प्राप्नोति निश्चितं परमेव जे भी તમને દ્રવ્ય આપ્યું છે એવું નહીં ભગવતે નારાયણાય નમઃ વિષ્ણુ નમસ્કાર સાહેબ શ્રી હનુમાનજી મંદિર ઘોડાસર આજે શું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય આજે 12/4/2025 શનિવારે આપણા હનુમાન દાદાનો જન્મોત્સવ છે એ ઉજવવા માટે આપણે છેલ્લા 22 વર્ષથી આ રીતે હવન કરીએ છીએ બપોરે 7 વાગે આપીએ છીએ ત્યાર પછી આરતી થાય છે અને ત્યારે આજે નહીં પણ આવતીકાલે ભંડારાનો પ્રસંગ પણ રાખેલો છે આપણા ઘોડાસરના આગેવાન એવા શ્રી અશોકભાઈ ઠાકોરના સાહિત્યમાં વેરાઈ માતાએ દર વખતે પલ્લીનો પણ પ્રસંગ કરવામાં ઉજવવામાં આવે છે ઓમ ભગવતે નમઃ નારાયણાય નમઃ જો ભાઈ
કોઈ બધી બી જે આવવાનો છે એ મારો આજે ભાઈ છે. આખો દિવસ પણ હું તમને સંકલ્પિત વિધિને અનુસાર કહું છું સવારથી લાડુનો પ્રસાદ કે અહીંયા જે મહાદેવની આપણે પૂજા કરી પૂજા માટે કેક કાપવામાં આવશે. ત્યાર પછી એને ઇન્ટરવ્યુ લેવું હોય કે જે લેવું હોય તે આવતીકાલે ભંડારાનો પ્રસંગ અને જેના જે સંકલ્પ એમાં હોય દરેકને તે પ્રસાદ લેવા માટે ત્યાં આપેલું છે. આ રીતે છેલ્લા 22 કોઈના વર્ષથી આપણે બંધુકથી નથી. દાદાને જો જન્મોત્સવ વાતને સાંભળી લો. કથા કીર્તન આપણે કરીએ છીએ. મહાદેવની જે દર પૂજા મંગળવારે કરીએ છીએ સુંદરકાંડનો એટલે પાઠ મહાદેવ કરવામાં આવે છે. એટલે દર શનિવારે તમને મહાદેવના હનુમાન સ્વરૂપમાં જ ચાલીસાનો કહીએ કે પાઠ કરીએ હનુમાન છીએ. દાદા છે ને અને મહાદેવ. દાદાનું એટલું સત છે કોઈ પણ કામ માટે કોઈ 12મા બાધા ઋતુએ રાખે તો પરિપૂર્ણ થાય અને છે. એ જ મહાદેવના અને દાદા સંકલ્પથી સાક્ષાત આપણે અહીંયા છે. પૂજા અત્યારે કરીએ અમારા છીએ. હજુર છે. કોઈને બોલો શ્યામ. મનમાં આ મતલબ કઈ વસ્તુ રાખવાની નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ.